गोरी सब छड़ के चली सज धज के, सच क्या है तुझे ना पता। ओह हेलो, क्या आपको भी ये गाना पसंद आया? मैं तो इसकी धुन में खो गई थी। आज जिस आर्टिस्ट को मैं अपने सामने लेकर आ रही हूँ ऑन द स्क्रीन, हिज नेम इज समीर कोतवाल और ये उन्हीं का गाना है। समीर एक यंग एंड फ्रेश सिंगर हैं जिन्होंने काफ़ी सारे शोज़ अब तक कर लिए हैं। मैं श्रुति शर्मा ऑन स्टार्स अनफोल्डेड आज समीर कोतवाल के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड खेलने जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं समीर से उनकी सिंगिंग जर्नी, किस तरह के चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आई और कैसा करियर ग्राफ रहा है उनका आज तक का। First of all, I'd like to thank you for inviting me on this show. It's a beautiful show and looking forward to it. मेरी जर्नी की बात की जाए तो I started my journey around 13 years ago, 12-13 years ago. जब शुरू किया तब तो कुछ पता नहीं था कि आगे क्या करना है। ये पता था कि हाँ म्यूज़िक में ही कुछ करना है एंड इतना पता था कि हाँ मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। ये नहीं पता था कि ये जर्नी इतनी लंबी रहेगी एंड यू नो इट्स गोइंग टू बी सच अ लॉन्ग रफ रोड। बिकॉज मैं पुणे में था बचपन से एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम पुणे, आई डिड माई जूनियर कॉलेज फ्रॉम पुणे। सो स्कूल्स में तो पॉसिबल नहीं था बिकॉज इट वॉज अ मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल। सो सिंगिंग एंड ऑल तो बहुत दूर की बात है। वी वर ऑलवेज इनटू फिजिकल एक्टिविटीज एंड क्रॉस कंट्रीज एंड रैपलिंग एंड you know all the military trainings that you get, NCC and stuff. I was in Air Force in my school. But 11th 12th में जैसे ही मुझे मौका मिला I got my admission done in गरवारे college in Pune. तो वहाँ पे हुआ ये कि I got the admission a little late. तो वहाँ के हॉस्टल में मैंने एडमिशन लिया, लाइक मैदान कॉलेज एंड ये हॉस्टल। तो होता ये था कि वो थोड़ा पास पड़ जाता तो I took the admission. अब मेरा एडमिशन हुआ थोड़ा लेट, सो आई यू नो वेंट टू द हॉस्टल एंड मैं अपने कबर्ड वबर्ड लगा रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल जस्ट बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट वेयर इट ऑल किक्ड ऑफ, यू नो। सो द फर्स्ट डे आई एम लाइक नो सेटिंग अप माई कबर्ड एंड माई बेड एंड स्टफ लाइक दैट। आई डोंट नो एनीबॉडी एंड लेट होने की वजह से जितने भी पहले मेरे लोग थे मेरे ही बैच के, वो थोड़े एक दूसरे से जान पहचान में थे। दे वर गुड फ्रेंड्स यू नो बाय देन बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट 20-25 days late in the college, in the hostel. So these seniors they came and they're like, oh चलो नए एडमिशन आज, you know, new boys आज हॉस्टल की सिंगिंग कंपटीशन है and आप सबको उसमें हिस्सा लेना है। आपको सिंगिंग आती हो या ना आती हो, doesn't matter but you have to. It was almost ragging you can say, but आज जब उसको याद करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, you know. तो जैसे ही मेरा मौका आया I sang and I was keeping my eyes closed all the while because I was pretty nervous. तो मैंने वो टाइम पे गाया था, तुमने ना जाना कि मैं दीवाना, मेरे दिल की है जो दास्तां, सुनो ना, ये गाया था। And the principal approached me कि you know why don't you represent our college, you know, and to inter-college singing competitions. So I won a lot of inter-college competitions for my college and you know that's how the journey started. Then I came to Mumbai. I never wanted to come to Mumbai, honestly. I wanted to be in Pune and do my further education. But I had to come. I got my admission done in Rizzi College of Architecture in Bandra. So वहाँ पे festivals में गाने लग गया and वो भूत सवार होने लग गया धीरे धीरे, you know, कि let's do this. I remember crashing into Vishal and Shekhar in a restaurant in Bandra. एंड उसके बिल्कुल एक दिन पहले मैं गया था सारेगामा के ऑडिशन के लिए। वहाँ पे पूरा दिन खड़ा रहा था लेकिन मौका नहीं मिला था। बट या मौके, जैसे आपने कहा कि मौके कैसे मिले, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिले, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं मिली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वोंट लाई। आपको यहाँ पे मौके बनाने पड़ते हैं। बहुत चक्कर लगा है एवरी डे थाने से अंधेरी, बट जाने का फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे एक लिरिसिस्ट आए हुए थे। सो दैट लिरिसिस्ट हेल्प मी आउट टू मीट. He saw the spark in me and he was also struggling, the lyricist. So that's how the journey started and 13 साल की जर्नी में शॉर्ट में कैसे निपटाऊँ बताओ. So yeah, it's been a very long rough journey
And yeah, things have been better now since past 4-5 years, thankfully, by the grace of God and by the grace of my audience. Shows हो रहे हैं, jingles हो रहे हैं. I'm also a radio jockey, so वो मैं कर लेता हूँ कभी कभी. And yep. क्या गायकी के लिए एक गुरु का होना जरूरी है, और कैन यू सिंग इवन विदाउट अ गुरु? टफ क्वेश्चन. गायकी के लिए गुरु का होना ज़रूरी है, आई वुड से. नाउ इसमें दो पहलू हैं, बिकॉज लाइक आई एम नॉट अ ट्रेन्ड सिंगर, है ना. मैंने कभी किसी से सीखा नहीं, बट इतने सालों से, तकरीबन 15, 16, 17 साल, 18 सालों से आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑन माई ओन. तो यूट्यूब भी आ गया है, तो यूट्यूब पे आई listen to a lot of music. I listen to a lot of interviews and theories and stuff. So I believe that, and I believe सिर्फ Guruji होकर does not mean you're going to sing well. It should be God gifted first. It's just like you need to have that talent basically. Your Guruji can only polish your skills, right? I know a lot of people who have been learning music and singing since past 20-25 years. I should not say it, but when I listen to them sing, it does not feel like that they have learned for so many years. Apart from that, the second point is, if you see the greatest singers of all time in India, be it Kishore Da, be it Mukesh ji, be it Abhijit, be it KK, be it Kunal Kanjewala, so many. Subramaniam Sab, I think he's never learned. He never learned music. So yeah, it's not about having someone. If you have, of course, it's nothing like it. But I believe it's more of a spiritual connect. सिर्फ आप बैठ के किसी के सामने बैठ के आप नहीं सीख सकते. आपका खुद का गला चलना चाहिए. And I think experience से बड़ा कोई टीचर नहीं होता. गुरु होना बहुत ज़रूरी है, बट सही गुरु होना भी बहुत ज़रूरी है, ये मैं कहूँगा. Because कई बार क्या होता है, when you have a guru and you are learning from him or her for a lot of years, a lot of time, तो आप कहीं ना कहीं उनके जैसे साउंड होना शुरू कर जाते हो, which is a bad thing, I believe. But yeah, if you have a guru, please go ahead and learn. समीर, क्योंकि आप एक सिंगर हैं और काफ़ी मेहनत कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, हम ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि आप अपनी रिहर्सल्स कैसे करते हैं. How do you prepare yourself before any show? So how do I prepare for my shows? हुआ क्या है ना कि पिछले कुछ सालों में I believe I have got that confidence कि अगर आप मुझे शायद 10 करोड़ लोगों के सामने भी खड़े कर दोगे तो I'll still manage it, एक कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल. रिहर्सल की बात की जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, me and my band, we don't rehearse much. We have always been very spontaneous on stage. In fact, बस कुछ बहुत बड़े shows जब होते हैं, concerts होते हैं, we have to make a lineup of what we're going to sing, a sequence of it. But normally we just go spontaneous. We just know that these are medleys and these are our songs. But we never really plan. Rehearsals एक या दो बार किए होंगे हमने. Because we have that tuning into, with each other. So yeah, rehearsals is not my thing, to be very honest. I like to keep it very spontaneous because every time and every audience is different. The venue is different. The occasion is different. So rehearsal is not my thing. Samiir, what inspires you to be a singer? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सिंगिंग में सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? What inspires me? कौन सी ऐसी चीज़ है? मुझे ऐसा लगता है म्यूज़िक खुद में ही एक ऐसी
चीज़ है, एक अजूबा है कि उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता. What inspires me to do music, or I don't know, it's just godly, it's spiritual. I feel good when I sing. There's nothing precious than being on stage and listening to people singing your own song along with you. There's nothing better than people coming to you after the show and telling you it was beautiful and they enjoyed it. So these experiences and my dreams, I want to travel the world with my music, and I think that inspires me to sing. Yeah. Samiir, being a singer, what is that award that you desire the most? Being a singer, being a vocalist, the award that I desire the most is, of course, as I've named my dog, Grammy. Yeah, so winning a Grammy award is one of my biggest dreams. बहुत पहले से. Can you imagine, मैंने अपने dog का ही नाम Grammy रखा हुआ है. So that itself shows and says a lot. Working on it काफ़ी सालों से. But होता क्या है ना, थोड़ा सा Indians के लिए या Asians के लिए getting a Grammy is very difficult. Because they consider their own albums and music. So for an outsider, someone from Asia, or थोड़ा मुश्किल हो जाता है because agencies नहीं होती है आपके पास, उतना बड़ा label नहीं होता, और independently तो और भी मुश्किल हो जाता है. माना जाता है कि सिंगर और शायर थोड़े रोमांटिक होते हैं. Are you? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि singers and musicians and शायर्स, they are all romantic, hopeless romantic, I would say. मेरी बात की जाए तो yes, I am big time hopeless romantic. But sadly, I'm still single. Some experiences in life, they teach you a lot. But romance and love is something that is very beautiful, and everyone should be romantic. Romance के बिना क्या जिंदगी है यार. Romance नहीं है तो मैं अपने love songs या romantic गाने नहीं लिख पाऊँगा या गा नहीं पाऊँगा. So romance is a beautiful thing, and yeah, I am hopeless romantic. Samiir, name one singer who was your childhood crush. One singer who was my childhood crush. Like I said, I never was at home when I was a kid, and मुझे music, singing कुछ नहीं पता था because I was in a military boarding school for almost 7 years. But हाँ, जब थोड़ा होश संभाला 11th, 12th और उसके बाद, तो I had a big time crush on Shreya Ghoshal. अब मैं जब उनसे कभी मिलूँगा फिर से तो I'll tell her that. Shreya was one big time crush of mine. Taylor Swift, Tab, and so many. I mean, I almost had crush on every other singer. इससे पहले हम आगे का क्वेश्चन आंसर राउंड खेलें, मैं अपनी ऑडियंस से ये शेयर कर लूँ कि समीर पेट लवर हैं. He is an ardent fan of all the animals. He has done so much for the street animals, especially the dogs. समीर, प्लीज़ इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि आपका लव पेट्स के लिए कैसे आगे बढ़ा और किन किन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में इस चीज़ को आगे बढ़ाने की सपोर्ट की. Talking about pets, आपने मेरी सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करना शुरू कर दिया यहाँ पे. सो या, पेट्स के बारे में अगर कहा जाए तो मेरे घर पे पहले से even when I was not born, my dadi and all these people, when my mother was a kid and all, she tells me that हमारे घर पे तब मेरे ख्याल से 20-25 fish tanks हुआ करते थे, white rats हुआ करते थे, pigeons and parrots and cats and dogs. So वो मेरे ख्याल से अंदर ही, it's in my blood to be an animal lover. But in 2016, when I got my pet, my dog, I won't call him my pet actually, my dog Grammy, a beagle. So he was up for adoption, and mom and I anyways were planning to get a dog, but we were very skeptical about it because
getting a dog is a responsibility and हमारे घर पे सिर्फ हम दोनों होते हैं, my mother and myself. So it was already a responsibility to handle mama's health and stuff. She keeps a little unwell. So I don't know how it happened. I just got that notification, this puppy is for adoption, and then coincidentally it turned out to be my friend's mutual friend. So I went on YouTube and searched about beagles and did some study, and the next day I got him. तो जब से उसको लाया है, पहले I was very much into dogs and all, but not very much. But जब Grammy आया, my complete life changed, and it's changed my perspective of looking at animals completely. और उसके बाद से तो चाहे वो elephant हो, गाय हो, कोई भी बर्ड हो, एनीथिंग. मेरे घर पे कौवे आते हैं, उनको मैं रोज़ खिलाता हूँ. स्पैरोज, आई हैव स्पैरो हाउसेस इन माय हाउस. आई हैड टर्टल्स बिफोर. I just in a few years ago on my birthday I freed them in a nearby lake. So yeah, talking about being an animal lover, I have my Facebook page which has a very good reach. So मैं कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करूँ. मेरे शोज़ में कई बार, मतलब शोज़ का और म्यूज़िक का और एनिमल्स का कोई लेना देना नहीं होता है, बट एवरी टाइम आई डू अ शो, बिफोर आई एंड माई शो आई ऑलवेज मेक एन अनाउंसमेंट और मेक इट अ टॉक, अ जनरल टॉक कि thank you for having me and all of that, and have a great day, have a great year and stuff, and please be kind to animals. That's what I always end my show with. That's how big I am as an animal lover. The only dream is to buy a big piece of land and keep thousands of animals in it. Samiir, give us 3 biggest turn-offs in your life. What is it that you dislike the most in people? 3 things. 3 things that I dislike the most in people. Pretty easy. First being they don't like animals. People who abuse animals, they don't prefer having animals around, or they just basically animal haters. Second, people who waste water. I don't know why it irritates me. I get very angry when I see people wasting water, because water is our planet. We don't have any other planet. So yeah, wastage of water is something that angers me a lot. And third thing that turns me off is arrogance. I love people who are polite. I love people who are kind. People who have a very bad tone of talking, it's a big turn off. Samiir, name one animated movie which you would love to sing for. One animated movie I'd love to sing for. I'm not a big fan of animated movies, to be very honest. But if you still ask me, because I've done animation, I've learnt animation. It was like long ago, but I never practiced it. I never worked in an animation company. If you still ask me, I would say The Lion King. देखी नहीं अब तक, honestly. But काफ़ी popular है, तो I think I would sing for that. Finding Nemo I've seen. I've even watched Ratatouille, Incredibles. बहुत पहले देखी थी. But yeah, Lion King or Finding Nemo is my answer. Samiir, I know a fact that most of the times you do rehearsals for your singing. But जब आप singing नहीं करते तो आप अपना free time कैसे spend करते? How do you spend your free time at home? How do I spend my free time at home? To be very honest, so many responsibilities, they hardly leave me with any free time. I play with Grammy, my dog. I love spending time with my mother. You'll never find me or hear me saying I'm going to the club or I'm going to the movie or something like that. I know it's pretty boring, but I love spending time at home when I'm not working at all. I cook a lot. I love cooking, and I have OCD issues, so most of the time that I'm at home and I'm not working, I'm always cleaning something or the other. I get very irritated if I see things here and there. So
And as I told you, mom stays a little unwell, so it's all on me. So hardly any time to be free, honestly. Apart from that, what do I do in my free time? I watch a lot of interviews of stars, people who have made it big, and I learn and get inspired from them. And apart from that, I try and connect with my followers on Facebook or Instagram, and I try and reply to all of them. समीर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वो 3 चीज़ें जिसके बगैर आप घर से कभी नहीं निकलते. 3 things without which you would never leave your house. 3 things that I'd never leave behind or leave my house without. My phone, of course. Phone is just a basic necessity. I never leave my house with literally nothing. Yeah, it's pretty boring. I just realized. Phone. Yeah, that's it. 3 things. A hanky. Very basic. A hanky, I guess. And some cash. That's it. Nothing fancy. Nothing fancy at all. सिंगिंग आपका पैशन है, I know. बट अगर आप सिंगर नहीं होते तो आप क्या होते? If you wouldn't have been a singer, what would you be? If I wasn't a singer, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में. I've done animation, I've done architecture as well. I think if I wasn't a singer, I could have become a chef or an Air Force pilot. I wanted to be a fighter pilot when I was a kid. As I told you, I was in a military boarding school, so I was in my NCC Air Force. And in fact, I was a sergeant of it. It was pretty sure that I would get selected into NDA, but for some weird reason, my hall ticket came a day late, after the examination to my hostel. So I could not apply, and by the time I could apply next year, my age had already passed 19 years, So I think if I wasn't singing, I would have been a fighter pilot, maybe, or a table tennis player. I was pretty good at it, yeah. किसी एक गायक को या सिंगर को हम इसी तरह से तो जाने दे नहीं सकते. इसीलिए अब हम आपको कुछ बॉलीवुड हस्तियों के बारे में बताएंगे. प्लीज़ उनके नाम सुनकर उनका कोई भी गाना अगर आपको याद हो तो हमारे लिए चंद लाइनें गा दीजिएगा. शमी कपूर साहब. Yeah, Shami Kapoor Sahab. So many, The Dance King. दीवाना हुआ बात सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ली प्यान अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल. राजेश खन्ना साहब. ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा. गोविंदा साहब का गाना pretty obvious. किसी डिस्को में जाए डुम डुम किसी होटल में खाए किसी डिस्को में जाए किसी होटल में खाए कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम. चलो इश्क लड़ाए चलो इश्क लड़ाए चलो इश्क लड़ाए सनम चलो इश्क लड़ाए चलो इश्क लड़ाए चलो इश्क लड़ाए सनम. उनके बहुत सारे गाने हैं. हुस्न है सुहाना आगे दीवाने मुझे सीने से लगा ना 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 गोरिया चुराना मेरा जिया गोरिया चुराना मेरा जिया. He himself sings so well. Govinda Sahab is a very good singer. You should check his music out. जाने से पहले समीर कुछ ओरिजिनल भी सुना जाए.
Please sing few lines from any of your original tracks and compositions. One of my original tracks, I released around 16 tracks in the last 1 year. उसमें से कुछ गाने हैं जो कि Spotify पर काफ़ी प्यार मिला लोगों से उनको, और ना रहा मेरा, गोरी, किसने कहा, नींद अभी फ़िलहाल शुभ नाइट प्लेलिस्ट जो कि Spotify पर है उस पर ट्रेंड कर रहा है. अभी जस्ट माई लेटेस्ट ट्रैक इज़ छीना छीना. इट्स अ पेपी ट्रैक, क्लब ट्रैक. So a lot of songs actually, but उसमें से एक चुनना बड़ा मुश्किल है because सारे मेरे ही बच्चे हैं. But I'd still sing. There's this song called Gori which stood on number 1 for almost 2 months. So I'll sing that for you. The song goes like, गोरी सब छड़ के चली सज धज के, सच क्या है तुझे ना पता, चली सब से तू बच के, रच 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 के, आँखों से वो पर्दा हटा, जिसके लिए तू जमाने को भूले, तुझको वो कब का भूल चुका. जानता था सारी बात, तुझसे पहली मुलाकात में कहाँ था, तूने न मानी मेरी बात, सोचता था मैं दिन रात, कैसे ये मैं समझाता. गोरी सब छड़ के चली सज धज के, सच क्या है तुझे ना पता, चली सब से तू बच के, रच 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 के, आँखों से वो पर्दा हटा. थैंक यू. आप सुनिएगा ज़रूर जाके इन सारे गानों को. Spotify, Amazon, YouTube Music, iTunes, Wink, Jio Saavn, हर जगह मौजूद है. You can just go and check some music out. Just go and type SAMIR, not EER. That's all for now. मैं श्रुति शर्मा जल्दी लेकर आऊंगी इस छोटी स्क्रीन पर आपके लिए एक नया चेहरा फिर. तब तक के लिए take care. God bless you all. Thank you for having me on this interview, guys. Thank you for having me here, Shruti. Stars Unfolded, thank you so much for inviting me here. I hope you enjoyed the conversation. Have a great year ahead. साल अभी जो शुरू ही हुआ है. And may God bless you with all the health. May all your dreams come true. I told you about my dog Grammy. He is here. I'll just show you. अरे आजा भैया. So that's Grammy for you guys. Grammy hates being hugged